अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। So students, in today's English grammar lecture, we are going to discuss about the translation paragraphs from 1 to 4. So first paragraph is, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। Students, to translate this paragraph, there are some difficult words and their meaning for the translation. First one, बाग, बाग को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। खुशबू, खुशबू के लिए फ्रेगरेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है। माली के लिए गार्डनर। मौसम बहार मीन्स स्प्रिंग। भर जाता है इज़ फिल्ड विद। लुत्फ़अंदोज़ होना, इंजॉय। Now there is a translation of this passage or paragraph. First one, there is a garden in front of my house. There are many plants and trees in it. Flowers of different colors bloom in spring season. Their fragrance spreads all around. In the evening, the garden is filled with men, women, and children. People walk about and enjoy themselves. Children run about in the garden. Now they are here, and the next moment they are in the other corner of the garden. I also go to the garden for a walk daily. In the evening, many gardeners look after the garden. Next, second paragraph. ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। नशेबो फराज मतलब अप्स एंड डाउन। Such moments also come in the ups and down of man's life when he totally loses hope. उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और उसके मुकाबले की सख्त ख़त्म हो जाती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आना, सी डार्कनेस एवरीवेयर, बिकम अ पेसिमिस्ट। ठीक है, ही बिकम्स अ पेसिमिस्ट एंड द पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपेयर। ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्मो हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। डिसअपेयर ख़त्म हो जाना, बिल्कुल नाउमीद हो जाना, मीन टोटली लूज़ होप। मुकाबले की ताकत ख़त्म होना, पावर ऑफ कंपटीशन, अगेंस्ट, ख़िलाफ़। डिग्निटी, शान। ठीक है, it is beneath man's dignity. All the progress in the world is the result of the determination and perseverance that Allah Almighty has granted to man. इंसान को चाहिए कि कभी भी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। ग्रांट, अता करना। लूज़ हार्ट, हिम्मत हारना। नेवर, कभी नहीं। फेलियर, नाकामियाँ। ब्लेस, अता करना। सर्टनली, यकीनन। सक्सेस, कामयाबी। अ मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट, instead he should face his failure manly. One day Allah Almighty will certainly bless him with success. Third paragraph.
एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिद्दड़ एक दरिया के किनारे रहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूज के बहुत से खेत थे। दरिया गहरा और चौड़ा था। गिद्दड़ जी भरकर खाना चाहता था। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊँट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ऊँट रजामंद हो गया। गिद्दड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। ऊँट दरिया में चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गिद्दड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा। Student, there are some difficult words related to this paragraph and their meanings. First one, गिद्दड़ यानी कि जैकल, खरबूजे के खेत, मेलन फील्ड्स, चौड़ा, वाइड, ऊंट, कैमल, किनारा या दहाना मीन्स बैंक, गहरा, डीप, जी भरकर खाना, ईट टू वंस फिल, मुत्तफिक होना या राजी होना, एग्री। ट्रांसलेशन है, वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. There were many fields of melon on the other side of the river. The river was very deep and wide. The jackal wanted to eat the melons to his fill. He could not cross the river. One day, he said to his friend camel, "If you get me to the other bank of the river, I shall be very thankful to you." The camel agreed. The jackal jumped up on the back of the camel, wading through the river. The camel reached the other bank. The jackal entered the melon field and began to eat melons with great delight. Fourth paragraph. डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। सनतो ज़रात में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिबे इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। स्टूडेंट, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन इंग्लिश. फर्स्ट वन, डर, खौफ या खदशा मीन्स फेयर. ज़ख़ीरे, रिज़र्व्स, कोशिश करना, स्ट्रगल, कम करना, कट डाउन, खपत या इस्तेमाल मीन कंजम्पशंस, ज़रात, एग्रीकल्चर, ख़त्म हो जाना, रन आउट, दरियाफ्त करना, डिस्कवर, कामयाब होना, सक्सीड, ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट्स, सनत, इंडस्ट्री, कम करना, curtail. There is translation of this paragraph. It is feared that the oil of the world will run out in a few years. Every country is trying to discover more reserves of oil. It is not known how far this struggle will succeed. The need of the hour is that we should cut down our oil requirements. The consumption of oil in industry and agriculture cannot be curtailed. However, personal needs can be curtailed. We should import buses in place of cars so that the facility of buses may be improved for the students. Students, there are some other paragraphs और पैराग्राफ राइटिंग जिसको हम कहते हैं ऐसे की फॉर्म में वो है. फर्स्ट वन, माई स्कूल. My school is a place of great charm for me. I read in government high school. It has big airy rooms for students. The school is electrified. It has two vast grounds for students to play. More than 1,000 students study in it. It has a well-equipped science laboratory. All the teachers are trained. Both the teachers and students love their school. The school has many grassy plots with plants and shady trees. The headmaster has an inspiring personality. He sits in his spacious office. The teaching staff is kind and devoted. A room is meant for two clerks. They all come to school in time. The school starts with a morning assembly. The rooms of the school and its ground are cleaned every day. This school has produced many leaders who are serving the country in all fields of life. I love my school. बेटा इस पैराग्राफ के अंदर आपने अपने स्कूल के बारे में बताना है कि आप यहाँ पे बताया हुआ है कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ा हूँ. मेरे जो मतलब के स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा रूम्स हैं. स्कूल जो है इलेक्ट्रीफाइड है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतज़ाम है. 2 बड़े बड़े ग्राउंड हैं खेलने के लिए. वहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब बच्चा जो है वो स्टडी करते हैं और लेबॉर्ट्री मौजूद है. तमाम टीचर्स जो हैं वो ट्रेन हैं और वो अपने
तमाम स्टूडेंट अपने स्कूल से प्यार करते हैं। ग्रासी प्लाट्स मौजूद हैं वहाँ पर, और हमारे हेड मास्टर जो हैं वो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। उसके टीचिंग स्टाफ के बारे में बताना है कि वो काइंड और डिवोटेड हैं, अपने काम की तरफ बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। रूम्स कितने हैं, कैसे हैं, ये सारा का सारा जितना भी स्कूल के बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं वो सारा इसके अंदर हम लिख देंगे। नेक्स्ट वन बेटा, गर्ल गाइड्स। Guides is an organization of girls. Its founder was Baden Paul. His sister Lady Engines also assisted him. Both the brother and the sister spread it to the four corners of the world. It is to make the girls aware of their duties. There are many programs which could the character mold the character of the teenage girls. They attend many activities and solve problems. They learn how to keep themselves clean and healthy. They build their moral and social habits in association with their fellow girls guides. They learn homemaking ability. They learn household skills like cooking, knitting, stitching, and planning. They learn basic fact about courtesy and etiquettes. Household affairs are given priority in this regard. It is a really very useful organization for our girls. बट इस पैराग्राफ के अंदर गर्ल गाइड्स की बारे में बताया गया कि सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गर्ल्स के बारे में, जिसे बेडन पॉल नामी आदमी ने इसको बनाया। उसकी सिस्टर जो है वो भी इसकी हेल्प करती है इसके अंदर, ठीक है, और उन्होंने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया था। और इसके अंदर बताया क्या जाता है, गर्ल्स को एम्पावर किया जाता है, उनको उनकी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और उनको बताया जाता है बेसिक स्किल्स के बारे में, ठीक है, ताकि वो, और उसके अंदर हाउस होल्ड स्किल्स भी आ जाती हैं जैसे कि कुकिंग, निटिंग, स्टिचिंग वगैरह। और इसके अलावा उनको हेल्दी रहने का तरीका बताया जाता है और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम की तमाम इसके अंदर गर्ल्स को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट वन, अ विजिट टू अ म्यूज़ियम। In Punjab, the Lahore Museum is very famous. It is famous for work of art and many other things of historical importance. It is an old imposing building with a high ceiling. The objects of historical value are displayed here and there in big halls. A curator looks after the museum. An employee of the museum took us round the beautiful section of the museum. Ancient swords, bows, arrows, daggers, shields, iron masks, garments, and old coins are displayed in glass cases. Brief description was also written beside the objects. Painting, picture, and clay models of the old craftsmanship were also attracting the people. There were seen beautiful statues of Queen Victoria and Buddha. There were many old manuscripts of the Holy Quran in a room. The gallery of the history of Pakistan was a most interesting place for me. It was very interesting. It took us to the days when our forefathers were struggling hard for Pakistan. It was an informative visit which gave us a wealth of knowledge and insight. Next one, a visit to a hospital. Once a clash took place between two parties. 3 or 4 persons were severely injured. I went to the hospital with my father to attend to a youth who had received head injuries. He was my cousin. He was in sorry condition. He was lying senseless. The doctors and nurses were trying hard to bring him to senses. After a while, he was seen gasping. I could not bear to see him still bleeding. Some other patients were crying with pain. There was a great rush of visitors. The doctors were also telling people to vacate the room for their patient welfare. Some men were coming and some were leaving. They were in a hurry. The doctors were doing their best to cure the wounded. It was a sorry sight. So student, this is all about our today's paragraph. Now we move on to the pair of word, which is the important part of 10th grammar. फर्स्ट वन बेटा, पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, दो सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग्स में थोड़ा डिफरेंस होता है और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर और फिर हम उनको पेयर बना देते हैं और उन पेयर की हमने क्या करनी है, मीनिंग एक तो डिफाइन करनी है और दूसरा हमने उनको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है,
फर्स्ट वन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना या मंजूर करना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। पेयर ऑफ वर्ड क्या है इसका? एक्सेप्ट। देखें बोलने में प्रोनाउंस करने में दोनों सेम है लेकिन मतलब दोनों क्या रहता है। इस ई वाले एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, और इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट जफर। सेकेंड वन अफेक्ट मीन्स असर करना। AFFECT। टू मच ड्रग इनटेक विल अफेक्ट योर हेल्थ। इफेक्ट मीन असर। माई वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम। एक्सेस रसाई। I have no access to his room. Next, EXCESS excess means zyati. Excess of everything is bad. Next one, alter, badalna. The nature of God never alters. And altar, ALTAR means kurbanga. He died at the altar of love. Next one, angel, farishta. Angels are heavenly beings. Angle, Zavia, draw an angle of 30 degrees. Bale mean गांठ या गट्ठा जिसको हम कहते हैं। He carried a bale of cotton. Bail, BAIL, bail means जमानत। He was released on bail. Next one, beside, BESIDE, beside mean साथ। He stood beside her father. Besides, BESIDES, besides mean ilawa. I know Arabic besides English. Next one, birth, BIRTH, birth mean पैदाइश। I don't know my date of birth. Birth, BERTH, birth mean रेलगाड़ी में जो सोने की जगह होती है। The lower berth is reserved for me. BRIDLE, bridle mean लगाम। I bought a bridle for my horse. BRIDAL, bridle mean अरूसी या दुल्हन के बारे में। She is putting on her bridal dress. Break, BREAK, break mean तोड़ना। I cannot break this stick. Brake, BRAKE, break mean ब्रेक, जो कार या गाड़ियों की जो ब्रेक्स होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अप्लाई द ब्रेक एंड स्टॉप द कार। नेक्स्ट वन, कैनन, CANON, कैनन मीन असूल। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी। कैनन, CANNON, कैनन मीन तोप। अ कैनन वॉज फायर्ड। नेक्स्ट वन, कैनवास, CANVASS, कैनवास मीन वोट लेना। आई कैनवास फॉर वोट्स। एंड कैनवास, CANVAS, वलायती कपड़ा। माई शूज आर मेड ऑफ कैनवास। नेक्स्ट वन, कास्ट, CAST, कास्ट मीन फेंकना। आई कास्ट द नेट टू कैच फिश। CASTE, कास्ट मीन जात। हिंदू हैव मैनी कास्ट। नेक्स्ट वन, कैटल मीन्स मवेशी। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल, KETTLE, कैटल मीन हंडिया। Place the kettle on the fire. Next one, sell, SELL, sell mean बेचना। I cannot sell my watch. CELL, sell mean coterie. He was locked up in a cell. Next one, check, CHECK, check mean पड़ताल करना। Please check my accounts. And check, CHEQUE, check mean जो बैंक चेक होते हैं उनकी बात की जा रही है। ही इशूड अ चेक फॉर ₹100। नेक्स्ट वन, साइट, CITE, साइट मीन हवाला देना। ही साइटेड द वर्सेस ऑफ होली कुरान। नेक्स्ट वन, साइट, SIGHT, साइट होता है मंजर। हिज आई साइट इज वीक। नेक्स्ट वन, साइट, SITE, साइट मीन मकाम। दिस इज़ द बेस्ट साइट फॉर ओपनिंग अ स्कूल, या जगह भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट वन, कोर्स, COURSE, कोर्स मीन रास्ता। यू हैव अडॉप्टेड अ रॉन्ग कोर्स। एंड COARSE, कोर्स मीन खुरदरा। ही इज़ ड्रेस्ड इन कोर्स क्लॉथ्स। नेक्स्ट वन, कॉप्स, CORPSE, कॉप्स मीन लाश। अ कॉप्स वॉज सीन फ्लोटिंग इन द रिवर। CORPS, कॉप्स मीन रिसाला। He is the member of college sports corps. Next one, dairy,
DAIRY डेयरी, दूध मक्खन का कारखाना। I buy milk from the dairy farm. Next one, diary, DIARY diary, I write every event in my diary. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमने इसके अंदर जितने भी स्टार्ट में ट्रांसलेटिंग पैराग्राफ्स किए, बाद में हमने दूसरे पैराग्राफ्स किए, उसके बाद हमने पेयर ऑफ वर्ड्स किए। इन तमाम को अपनी अच्छी तरह से याद करना है। और ये आपके 10th क्लास के अंदर ग्रामर पोर्शन जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके काफ़ी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।